Okay, dear students, I am going to teach class 9 subject physics. The motion chapter is going on. This is the part 4. In this part, I am going to teach equations of motion. Okay, गति का समीकरण. Equations of motion है क्या? The equation relating various quantities in motion with uniform acceleration are called equations of motion. Okay? The equation relating various quantities, इसमें various quantities का relation show करता है as a relation between u, v, t, a and distance covered s. Okay, this equation of motion gives the relation between initial velocity, final velocity, time taken, acceleration and distance covered s. Okay, so there are 3 equations of motion in this topic. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v is equal to u plus at. Okay, v is equal to u plus at, where v is equal to final velocity, u is equal to initial velocity, a acceleration and t for time. Similarly, second equation है s is equal to ut plus half at square, where all these quantities have visual meaning and s is distance covered. Third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as. Okay, in this way there are 3 equations of motion. First equation of motion, second equations of motion and third equations of motion. So let us be derive one by one. Okay, so firstly we derive first equation of motion. First equation of motion, v is equal to u plus at. Okay, so let consider a body having initial velocity u, which is subjected to uniform acceleration a for time taken t second, such that final velocity of the body becomes v. Okay, in this case, by definition of acceleration is equal to होता है change in velocity by time. We know the definition of acceleration. Acceleration is equal to change in velocity by time. Okay, so let us derive first. Acceleration is equal to change in velocity by time taken, and this one change in velocity means final velocity minus initial velocity. Okay, by time taken. And a for acceleration, final velocity is v, initial velocity u and time taken t. Now it can be written in this form, v minus u is equal to at by cross multiplication. Okay, then v is equal to u plus at. Understand? If u will brought right side, यदि right side को ले आएंगे इसे तो u plus हो जाएगा u plus at. यहाँ v is equal to u plus at. This is the derivation of first equation of motion. Derived. Understanding? I think you would have understand the first equation of motion. Okay? Let us derive the second equations of motion. S is equal to ut plus half at square. Okay? Now let us derive second equations of motion. Okay. Dear students, now I am going to derive second equations of motion. Okay, so second equations of motion क्या है? S is equal to ut plus half at square, where all these physical quantities have usual meaning. Okay, S is equal to ut plus half at square. Let us derive second equation of motion. Similarly, माना कि कोई बॉडी जो है इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है, ठीक है, तो लेट u द इनिशियल वेलोसिटी v
final velocity and acceleration produced is a, time is taken t, and s is equal to distance covered. इसमें distance covered ही निकलना है. Okay, so we know that average velocity is equal to होता है initial velocity minus final velocity by time plus initial velocity plus final velocity by time taken. This is average. Average means औसत. तो औसत वेग velocity is equal to होता है u plus v by 2. Okay, but we know that distance is equal to average velocity into time taken. Okay, distance is equal to average velocity into time. Distance, it is denoted by s, so we can write here this equation, s is equal to average velocity into time. The average velocity is this u plus v by 2. Okay, u plus v by 2 into t. Okay, time taken. Time. Now substituting the value of v is equal to u plus 80 in equation first. अब इस इक्वेशन में फर्स्ट में v is equal to u plus 80 का मान पुट करेंगे यहाँ पे. v के जगह पे u plus 80. Okay, in this equation substituting the value of v is equal to u plus 80 in equation 1. Okay, now s is equal to u plus 80. तो u plus और v के जगह u plus 80 by 2 into t. Now calculate this. S is equal to u and u, 2u plus 80 by 2 into t. Okay, now it is multiplied with t, to 2ut plus 80 square by 2. Okay, this one. After that it is separated 2ut by 2, 2ut by 2. Okay, plus 80 square by 2, this term. Now 2 से 2 cancel हो गया here, तो s is equal to ut plus half 80 square. Understanding? Now this equation has been derived. This is derived, yeah, proved. I think you would have understand. If you are not able to understand, then play the video again, okay, and again for clear understanding. Okay, so this equation, second equation of motion, can be used to calculate the distance traveled by body in time t. Okay, this equation, second equation of motion, help us to derive or calculate the distance traveled by a body in time t. Okay, it will help you to solve the numerical problem, all these equations. Okay, now let us see derive the third equations of motion. Okay, okay, dear students, now I am going to derive the third equations of motion. Third equations of motion क्या है? v square is equal to u square plus 2as. Okay, let us derive it. Now consider a body having initial velocity u. मान लिया कि कोई भी बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है. ओके, कंसीडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u moving with a uniform acceleration a. ओके, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से गतिशील है for time t सेकंड, such that इस प्रकार गतिशील है कि the final velocity become v and the distance covered is s. Okay, let a body having initial velocity u moving with uniform acceleration a for time t seconds, such that the final velocity become v and the distance covered is s. Now we know that, हम लोग जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अभी हम लोग डिराइव कर चुके हैं कि v is equal to u plus ad. This is the first equation. Okay, we take help from equation first and second, the third equation can be derived. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s is equal to ut plus half ad square, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v is equal to u plus ad. इन दोनों की सहायता से the third equation of motion can be derived. Okay, let us from equation first देखिए, rearranging the first equation.
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रीअरेंज कर दिया, क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस at है, तो इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म ऑल्सो, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, t इक्वल टू v माइनस u बाई a. ओके, लेट अस टेक द थर्ड इक्वेशन. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, अब इस t का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी पुट इन इक्वेशन टू. t का वैल्यू v माइनस u बाई a इज पुट अप इन इक्वेशन नंबर 2. इसमें t का पुट करेंगे, t का वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग इक्वेशन 2 में. नाउ वी गेट s इक्वल टू u और t के जगह पे v माइनस u बाई a प्लस 1/2 a और t स्क्वायर है यहाँ, तो t के जगह v माइनस u बाई a का होल स्क्वायर. नाउ सोल्व दिस इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे. ऑन सोल्विंग दिस इक्वेशन s इक्वल टू अब u v, यहाँ u एंड v मल्टीप्लाइड हो गया, ब्रैकेट के अंदर है u v माइनस u इंटू u स्क्वायर बाई a प्लस ये a और ये यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे v प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv. ओके, ये u v माइनस u के होल स्क्वायर है, v माइनस u बाई a का होल स्क्वायर मींस a माइनस b का होल स्क्वायर में इसे टूट गया. फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो उसी में तोड़ दिया गया v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv. ओके, नाउ 2a स्क्वायर, दिस a और एक a कैंसिल हो गया, यहाँ 2a बचा, तो u v माइनस u स्क्वायर बाई a प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv बाई 2a. नाउ टेक एलसीएम a और 2a का, 2a एलसीएम हो गया हियर, तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv. ओके, ये माइनस 2uv और दिस इज प्लस 2uv कैंसिल. ओके, अब यहाँ देखिए माइनस 2u स्क्वायर है और यहाँ प्लस u स्क्वायर है. ओके, देन नेगेटिव साइन यहाँ हो जाएगा माइनस 2u स्क्वायर और प्लस u स्क्वायर, यहाँ माइनस u स्क्वायर एंड हियर v स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बाई क्रॉस, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as. ओके, और या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या भी लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. इन दिस वे there are three equations of motion which show the relation between various quantities like u, v, t, a and distance covered s. So these equations show the relation of various quantities which help us to solve the numerical problem. इसमें numerical problem solve करने के लिए help करता है. Okay, so you must be remember and practice to derive these equations. Okay, practice makes the man perfect, so you must be practice to derive this equation. Now this equation can be also derived by graphical method. Okay, so in the next class we shall read these equations graphically. Okay, by graphical representation this equation can be also derived. Okay, now in this topic the equations of motion has been ended. The next day, the next class, we shall describe about the equations of motion by graphical method. By graphically we derive. Understanding? That's all. Thank you.